Lesson 06. The reward, इनाम. Theme. The story is a fantastic adventure of a young man, Gorgios, a good athlete of his age. He hit on a wild idea of becoming a court acrobat. He worked for it and stuck to it long enough, and remained determined in his mission. He ultimately succeeded in achieving his ambition in more than 60 years without using any shortcut or becoming frustrated. A person who remains determined and keeps on his struggle wins his ambition. मरकजी ख्याल. कहानी एक नौजवान गॉर्जॉयस की एक हैरत अंगेज मुहिम जोई की है. वो अपनी उम्र का एक अच्छा खिलाड़ी है. उसे शाही बाजीगर बनने का अनोखा ख्याल आया. उसने इसके लिए काम किया और इसमें लंबे अरसे तक उसी के लिए डटा रहा और अपने मकसद में पुरज़म रहा. वो बिलाखिर बगैर किसी मुख्तसर रास्ते का इस्तेमाल किए या मायूस हुए 60 साल से ज़्यादा अरसे में अपनी ख्वाहिश को हासिल करने में कामयाब हो गया. वो शख्स जो पुरज़म रहता है और अपनी जद्दोजहद पर कायम रहता है, वो अपनी ख्वाहिश जीत जाता है. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Some said opportunity was required for success, and millions never had it, other that only determination was needed. And then joined in, all for determination. If a man was determined to get anything and stuck to it long enough, he got it, said Jorkins. Anything? Asked Turbot. Anything, Jorkins replied, so long as he sticks to it, and sticks to it hard enough and long enough. Anything whatever. Turbot disagreed. Life is like a race. Jorkins went on, in which they tire after a while and sir down, or get interested in something else instead. The man who keeps on wins the race. And suppose a man wanted to be skating champion of the Sahara, said Turbot, and couldn't afford the money to get there. एक दिन क्लब में हमारी गुफ्तगू का मौजू मौका और अज़म था. कुछ लोगों ने कहा कि कामयाबी के लिए मौका की ज़रूरत होती है और लाखों अफराद को कभी मौका नहीं मिलता. कुछ का ख्याल था सिर्फ अज़म की ज़रूरत होती है और फिर सब अज़म के लिए शामिल हो गए. जॉर्किंस ने कहा, अगर कोई शख्स कुछ हासिल करना चाहता है और उसके साथ काफ़ी देर तक चिमटा रहता है तो वो उसे मिल जाता है. कुछ भी? टर्बट ने पूछा. कुछ भी, जॉर्किंस ने जवाब दिया. अगर वो इस मकसद से चिपक जाता है और इससे काफ़ी और लंबे वक्त तक चिमटा रहता है तो कुछ भी हो. टर्बट ने इससे इत्तफाक नहीं किया. जिंदगी एक दौड़ की तरह है. जॉर्किंस ने बात आगे बढ़ाई. मकसद में लोग थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं और बैठ जाते हैं या इसके बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं. जो शख्स डटा रहता है रेस जीत जाता है. और फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता हो, टर्बट ने कहा, और वहां पहुंचने के लिए रकम भी बर्दाश्त ना कर सकता हो. He'd make the money, said Jorkins, and he'd build a skating rink in the Sahara and organize a competition there. He'd be skating champion all right, if he really gives all his time to it. Could you tell us a case like that? Asked one of us. As a matter of fact, I can, said Jorkins, a very similar case. Let's hear it, said Turbot. There was a young fellow, said Jorkins, to whom his parents probably used to say the very things that we have been saying now, and very likely he, as many young fellows do, may have wanted to prove them wrong. I don't know, it was a long time ago. But, whatever his motive was, he hit on a most extraordinary ambition, and stuck to it. It was nothing less than to appointed court acrobat. What? Said Turbot. Acrobat, Jorkins went on, to the court of the country in which he lived. जॉर्किंस ने कहा, वो पैसा कमा लेगा और वो सहारा में स्केटिंग रिंग तैयार करेगा और वहाँ एक मुकाबला तरतीब देगा. अगर वो वाकई उसको अपना सारा वक्त देता है तो ठीक तौर पर स्केटिंग चैंपियन होगा. क्या आप हमें इस तरह का मामला बता सकते हैं? हम में से एक ने पूछा. दरअसल मैं बता सकता हूँ, जॉर्किंस ने कहा. बिल्कुल इसी तरह का एक मामला है. आइए ये सुनें, टर्बट ने कहा. जॉर्किंस ने कहा, एक नौजवान साथी था जिसके वालिदैन शायद वही बातें कहते थे जो हम अब कह रहे हैं
और बहुत इम्कान है कि वो जितना बहुत से नौजवान साथी करते हैं उनको गलत साबित करना चाहता हो। मुझे मालूम नहीं, ये एक तवील अरसा पहले की बात थी, लेकिन इसका मकसद जो भी था उसने इंतहाई गैर मामूली अज़म को अपनाया और उससे चमट गया। ये अज़म शाही बाजीगर मुकर्रर होने से कम का नहीं था। क्या? टर्बट ने पूछा। बाजीगर, जॉर्कन्स ने बात जारी रखी, मुल्क के दरबार में जिसमें वो रहता था। What kind of country was that? Asked Turbot. Never mind what kind of country was, said Jorkins. And as a matter of fact its customs weren't so silly as you suppose. They had no post of court acrobat, and never had had. But that didn't stop young Gorgios. That was his name. He was a good high jump in the hurdles and the 100 yards at his school. Well, there was opportunity, argued Turbot, if he was born a good athlete. But wait a moment, said Jorkins. You don't remain an athlete all your life, and he still had to get the post created. How did he do that? Asked Turbot. Simply by sticking to it, said Jorkins. He went into politics. They all do in that country. But he went into them harder than anyone else, and never gave up his ambition. Of course he made speeches, and fine ones, on many other subjects, but all the while he stuck to his one idea. ये किस तरह का मुल्क था? टर्बट ने पूछा। जॉर्कन्स ने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरह का मुल्क था, और हकीकत यह है कि उसके रस्म व रवाज इतने बेवकूफ़ नहीं थे जितना आप समझते हैं। उनके पास शाही बाजीगर का कोई ओहदा नहीं था और कभी होता भी नहीं, लेकिन इस बात से नौजवान गॉर्जॉयस नहीं रुका। ये उसका नाम था। वो अपने स्कूल में एक अच्छी ऊंची छलांगें और रुकावटें और 100 गज दौड़ जीत चुका था। ठीक है, फिर तो मौका था, टर्बट ने दलील दी। अगर वो एक अच्छा खिलाड़ी पैदा हुआ था, जॉर्कन्स ने कहा, लेकिन एक लम्हा इंतज़ार करो, आप सारी ज़िंदगी एक खिलाड़ी नहीं रहते, और उसे अभी पोस्ट तख्लीक करना थी। उसने ऐसा कैसे किया? टर्बट ने पूछा। जॉर्कन्स ने कहा, उस पर कायम रहकर वो सियासत में चला गया। वो सब उस मुल्क में करते हैं, लेकिन वो उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से गया और कभी भी अपनी ख्वाहिश तर्क नहीं की। यकीनन उसने बहुत से दूसरे मज़ामीन पर तकरीरें और उम्दा बातें कीं, लेकिन इस दौरान वो अपने एक ख्याल पर कायम रहा। The years went by, and the day came when he had power enough to preach his ambition openly, and he told them how the glory of their country and of its ancient throne would be increased if the post of court acrobat were created. He gave examples of other courts and greater ones. Of course many opposed him, that is politics. Of course it took a long time, that is politics too. But as the years went by he were down opposing arguments, till he had taught people what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete at court exhibiting perfect physical fitness, and how such an example would strengthen their soldiers and enable them finally to win the just rights of the nation in victorious battle against their accursed neighbors. And so the idea caught on, and to make a very long story short, the post of court acrobat was duly created. Both parents of Gorgios were by then long dead. By then, little remained to be done. He had only to stick for a few more days to that wild idea of his, and then, when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post, whom could they choose but the man who had worked for it all those years? साल गुजरते रहे और वो दिन आया जब उसके पास इतनी ताकत थी कि वो अपनी ख्वाहिश को खुले आम तबलीग करे, और उसने उन्हें बताया कि अगर शाही बाजीगर के ओहदे को तश्कील दिया गया तो उनके मुल्क और उसके कदीम तख्त की शान में किस तरह इजाफा होगा। उसने दूसरे दरबारों की मिसालें दी। यकीनन बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की। ये सियासत है, यकीनन उसमें एक तवील वक्त लगा। यही सियासत भी है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरे उसने मुखालिफ दलाइल को हरा दिया। उसने लोगों को ये सिखाया कि ये तमाम ममालिक के लिए क्या सबक होगा कि दरबार में एक नौजवान एथलीट कामिल जिस्मानी तंदुरुस्ती की नुमाइश करे, और इस तरह की मिसाल उनके फ़ौजियों को किस तरह मजबूत बनाएगी और आखिरकार अपने मलून पड़ोसियों के खिलाफ फतह बख्श जंग में कौम के मुनसिफाना हकूक़ जीतने के काबिल बनाएगी। और इसी तरह ख्याल समझ लिया गया, और एक बहुत लंबी कहानी मुख्तसर करते हुए, कोर्ट एक्रोबेट या शाही बाजीगर का ओहदा कानूनी तौर पर तैयार किया गया। गॉर्जॉयस के दोनों वालिदैन उस वक्त तवील अरसे से मर चुके थे। तब तक थोड़ा काम करना बाकी रह गया था। उसे अपने इस जंगली ख्याल पर
अपने इस अनोखे ख्याल पर सिर्फ कुछ दिन और चिमटा रहना था। जब ये सवाल नई तश्कीलशुदा पोस्ट को पुर करने के लिए किसी खिलाड़ी का इंतखाब करने के लिए पैदा हुआ, तो वो किसका इंतखाब कर सकते हैं, सवाए उस शख्स के जिसने इन तमाम सालों में उसके लिए काम किया था। So Gorgios was appointed acrobat to the court, and learned so late in life, what always takes time, that his parents were right after all. It only remained then to inaugurate him. And that is where I came on the scene, wandering about Europe as I used to do in those days when food used to be cheap and I was young and could easily walk long distances. I came to that country and they were wonderfully friendly, and they let me see the great ceremony, which took place as soon after the creation of the post as Gorgios's uniform could be got ready. And very magnificent clothing it was, a tight-fitting suit of red velvet, all gay with gold buttons and shining with lines of gold lace that wound and twisted about it. आखिर गॉर्जाइस को दरबार में बाजीगर मुकर्रर किया गया और ज़िंदगी में इतनी देर से सीखा, जो हमेशा वक्त लेता है, कि उसके वालिदैन बिल्कुल ठीक थे। तब ही उसका इफ्तिताह करना बाकी रहा, और उसी जगह मैं जाए वकुआ पर आया था, यूरोप से घूमते हुए, जैसा कि मैं उन दिनों घूमता था जब खाना सस्ता होता था और मैं जवान था और आसानी से लंबी दूरी तक चल सकता था। मैं उस मुल्क गया था और वो हैरत अंगेज़ तौर पर दोस्ताना थे, और उन्होंने मुझे अजीम तकरीब देखने दी, जो पोस्ट की तश्कील के फ़ौरन बाद ही हुई थी, क्योंकि गॉर्जॉइस की वर्दी तैयार हो चुकी थी और ये बहुत उम्दा लिबास था। सुर्ख मखमल का एक तंग फिटिंग सूट, सोने के बटनों के साथ तमाम शोख और सुनहरी फीते की लाइनों से चमक रहा था, जो उस पर बल खाती मुड़ी हुई थीं। The great throne room had been turned into a kind of gymnasium, with the members of the royal house seated along a raised platform at one end, and the principal officers standing beside and behind them. Great curtains of red and gold were hung along the walls, and the high swings of acrobats hung down with gilded ropes from the ceiling, and a row of neat hurdles was arranged on the polished floor, like the ones over which Gorgios had won his race when at school. Lights glittered, a band in pale green and gold played softly, and it was indeed a splendid scene. I will not describe it to you, because everything there, the uniforms and the ladies' brilliant dresses, was utterly put in the shade by the moment when the doors opened with a flood of golden light, and the old man in his brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life's work. अजीम तख्त के कमरे को एक तरह के जिम्नाजियम में तब्दील कर दिया गया था। रॉयल हाउस के मेंबरान एक सिरे पर उठाए गए प्लेटफार्म के साथ बैठे थे, और उनके पीछे खड़े बड़े बड़े अफसरान सुर्ख और सोने के ज़बरदस्त पर्दे दीवारों के साथ लटके हुए थे, और बाजीगर की ऊंची झोलों को छत से सजी रस्सियों के साथ लटका दिया गया था, और पॉलिश किए गए फर्श पर साफ रुकावटों की एक कतार का एहतमाम किया गया था, जैसे स्कूल में जब गॉर्जॉइस ने अपनी दौड़ जीत ली थी। लाइट्स चमक गईं, पीला, सब्ज़ और सुनहरा एक गाने वालों का गिरोह नरमी से मौसीकी बजाने लगा, और ये वाकई एक उम्दा मंजर था। मैं आपको इसकी वजाहत नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ यूनिफॉर्म और ख़वातीन के शानदार लिबास उस लम्हे तक बिल्कुल साए में डाल दिया गया था, जब दरवाज़ा सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ खुल गए थे, और उसकी शानदार वर्दी में बूढ़ा आदमी अपनी ज़िंदगी भर के काम की ताजपोशी करने के लिए उनके माबैन नमूदार हुआ। His white hair and the red uniform of the court acrobat showed each other off to perfection, and his thin figure worn with age was made all the more melancholy by the tight-fitting uniform. As thought tried by his long patience and the work of a lifetime, he walked slowly in his pointed shoes and leaned on a gilded stick. He came to the hurdles that he remembered, over which once he had won so easy a victory. As he came to the first, he looked up for a moment with a slightly sad expression towards the royal platform, as though he asked some question with his eyes. Whatever the question was, it was at once understood. शाही बाजीगर की सुर्ख वर्दी और उसके सफ़ेद बाल एक दूसरे के साथ भरपूर नज़र आ रहे थे, और उसका पतला उम्र रसीदा जिस्म तंग वर्दी में और अफसुर्दा हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नुकीले जूतों में चला और सुनहरी छड़ी पर झुका, जैसे वो अपने लंबे सब्र और ज़िंदगी भर के काम से थक गया हो। वो रुकावटों तक आया जो उसे अच्छे से याद थीं, जिन पर कभी उसने जीत हासिल की थी, जब वो पहले
रुकावट तक आया। उसने शाही प्लेटफॉर्म की तरफ अफसरदा नज़रों से देखा, जैसे आंखों से सवाल कर रहा हो। सवाल जो भी था फौरन समझ लिया गया। Royal smiles were directed towards him, and gentle applause broke out from every hand, which he understood at once, and the old bent from moved on away from the hurdle. Once he raised a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the ceiling. But again the applause broke out, assuring him that no actual activity was expected of him. And so, having made his bows, he was led to a seat, his life's ambition achieved. It must have taken him more than 60 years to do it, since first he came by that strange ambition of his. But he did it, not many stick to a thing for so long. And Jorkins uttered a quiet sigh, so clearly mourning over some lost ambition that he himself had given up, that not even Turbot asked him what it was. शाही मुस्कुराहटें उसकी तरफ आईं और हर हाथ ने उसकी तारीफ में ताली बजाई, जिसको फौरन समझकर बूढ़ा झुका हुआ जिस्म रुकावटों से आगे बढ़ गया। एक दफ़ा उसने सबसे निचले झूले जो छत से लटका हुआ था को छूने के लिए हाथ उठाया, लेकिन दोबारा तालियां बजने लगीं, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि उससे असल सरगर्मी की तवक्को नहीं। और इस तरह सामीन के सामने झुकते हुए उसे एक नशिश तक ले जाया गया। उसकी ज़िंदगी भर का मकसद पूरा हुआ। पहली दफ़ा से लेकर इस अनोखे ख्याल के हसूल तक उसे यकीनन 60 साल लगे होंगे, लेकिन उसने ये कर दिखाया। या ज़्यादातर लोग किसी चीज़ से इतने लंबे वक्त तक चिपके नहीं रहते। जॉर्किंस ने आह भरी, वाज़े तौर पर किसी ना पूरी होने वाली ख्वाहिश पर जिसे उसने तर्क कर दिया था, हत्ता कि जिसके बारे टर्बट ने भी सवाल नहीं किया कि ये क्या थी। Happy learning!